फॉर द सेक ऑफ डेरिवेशन हम सबसे पहले ये करते हैं कि जो फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सोलो ग्रोथ मॉडल है कि नॉट इज इक्वल टू एस एफ ऑफ के माइनस एन प्लस डेल्टा के, we can convert this equation into basically we can convert this equation into the growth forms, and what we can do k dot over k हम इसको तकसीम कर देंगे तो we will get this much as the growth of capital हमारे पास आ जाएगा. Previously we learned, हमने previously एक चीज सीखी है कि हमारे पास जो कैपिटल ग्रोथ या किसी भी वेरिएबल की ग्रोथ निकालने के लिए what we can do, we can take the time derivative that grow that particular variable and then divide that variable over that time derivative of that particular variable. Like we have taken the time derivative of k here, and after taking the derivative time derivative of k, we simply divide that derivative over k, so it becomes the growth of capital. So right now you got the growth of capital is equivalent to s f of k over k minus n plus delta k over k. So k over k will be eliminated. This one, इस term का जो k है ये k इस k के साथ eliminate हो जाएगा, and you will get n plus delta. So k dot over k is equal to 0 is equal to sf of k minus n plus delta. So इसमें हम further we can say that putting k dot over k, as we know that we have to do when we are talking about a steady state equilibrium. Steady state के equilibrium की बात करते हुए हम इसको इस तरह कर देते हैं कि हमारे पास k dot over k जो है वो equal to 0 होता है. So now what we've got, in fact we got sf of k over k is equal to n plus delta. So while the equation that we talked about, जो equation हमने उस वक्त जिसके बारे में गुफ्तगू की, जिसको हम ग्राफ बनाया, सबसे पहले वाला ग्राफ जो था जिसमें प्रोडक्शन फंक्शन के साथ नीचे हमने सेविंग को शामिल किया था. सो इन दैट केस इट मेक द इक्वेशन वाज sf of k is equal to n plus delta k, but this time we are going to have it from some other perspective as well. हम इसको कर सकते हैं, if you will simply take the derivative of this sf of k over k, it will become negative. ये नेगेटिव डेरिवेटिव आ जाएगा. f of k over k will be definitely the average product of the capital because the output is being divided by the capital. output को जो है वो हम divide कर रहे हैं किसके साथ? capital के साथ. So when we will multiply this s with the average product of capital, it will become the saving curve. So this saving curve must be equivalent to n plus delta when you are when you basically you are on the steady state value. हम यहाँ पे कह सकते हैं जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, सो द वेयर एस एफ ऑफ के ओवर के इज एक्सप्रेस्ड बाय सेविंग कर्व एंड प्लस डेल्टा इज एक्सप्रेस्ड बाय डेप्रिसिएशन कर्व. वी आल्सो नो एन प्लस डेल्टा, सॉरी यहाँ पे जो है देयर मस्ट बी एन प्लस डेल्टा. यस, जी n प्लस डेल्टा, दिस इज ये हमारे पास जो है एस एफ ऑफ के जो है एक्सप्रेस्ड बाय सेविंग कर्व, दूसरा है डेप्रिसिएशन कर्व. द सेविंग कर्व इज डाउनवर्ड बिकॉज इट्स डेरिवेशन इज नेगेटिव. अगर आप डेरिवेटिव लें, डिराइव करें saving curve को, तो the slope of the saving curve will be negative at asymptotes to infinity at k is equal to 0 and approaches to 0 as k tends to infinity, which is shown by the इनाडा conditions. हमें पता है कि इनाडा conditions जो है उसके इनाडा condition से के मुताबिक जो if k is approaches to 0, then the margin product to the capital will tends to infinity and the vice versa as well. Depreciation की अगर हम बात करें, and for depreciation, population growth rate and the depreciation growth rate both grow at a constant rate. दोनों जो है किसी एक constant rate के ऊपर grow करते हैं. So line is horizontal and no change in n plus delta along the scale of capital. अगर हम इन दोनों ग्राफ इन दोनों की कर्व्स बनाने की बात करें तो इट विल लुक लाइक दिस वन. ये जो आपके पास n प्लस डेल्टा है जो हमने वहां पे पीछे जो इक्वेशन फाइंड आउट की है, सो दिस विल रिप्रेजेंट n प्लस डेल्टा. इसका मतलब ये है कि इसकी स्लोप चूंकि कांस्टेंट है तो कॉन्स्टेंटली के साथ डेप्रिसिएशन रेट जो है वो ये इन्वॉल्व है n प्लस डेल्टा. सो दिस लेवल विल रिमेन फिक्स्ड
n plus डेल्टा का लेवल जो है वो that will remain fixed. This one, SF of k over k, which is the saving curve, this downward sloping curve shows the saving curve. ये downward sloping curve जो सी है, it shows the saving curve. और हमने ये देखा पिछली कंडीशन के अंदर या पिछली इक्वेशन के अंदर, जो इक्वेशन हमने ये आखिरी डिराइव की, SF of k over k is equal to n plus delta. अगर आप गौर करें तो इस इक्वेशन को हासिल करने के लिए हमें k डॉट ओवर k को 0 पुट करना पड़ा था, लाइक हियर. तो हम ये कह सकते हैं कि ग्राफ के ऊपर भी एस एफ ऑफ के ओवर के जो है वो डेल्टा के वो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द डेप्रिसिएशन कर्व व्हेन के डॉट ओवर के इज इक्वल टू 0. मैं इसी इक्वेशन की अगर इंटरप्रिटेशन या लिंक निकालूं तो आई विल हैव दिस वन लेवल, मेरे पास ये एक लेवल आ जाएगा, के डॉट ओवर के वुड बी 0, n plus delta s of k over k will be equivalent to n plus delta, and at that level of interaction, जिस लेवल के ऊपर ये सेविंग कर्व जो है डेप्रिसिएशन कर्व को इंटरसेक्ट करेगी, वो लेवल होगा के स्टार, एंड दैट विल बी कॉल्ड द स्टेडी स्टेट लेवल. अब अगर हम इस ग्राफ को मजीद एनालाइज करें तो वी कैन कम टू नो दैट के जो के स्टार से लेफ्ट साइड के ऊपर जो एरिया है और के स्टार से राइट साइड के ऊपर जो एरिया है, हम अगर देखें तो लेफ्ट साइड के ऊपर जो एरिया है वहां पे हम कह सकते हैं कि कैपिटल की वैल्यू जो है दैट इज लेस देन steady state, and on the right side of the K star shows that in this area the capital's level is more than the steady state's level, या capital का level economy के अंदर required level से ज्यादा है. So we can say that जब यहाँ पे ये ये area के अंदर जहाँ पे K is less than K star, then in this portion K dot over K would be positive. K dot K जो होगा वो positive होगा, like it will have the positive capital growth, जो पॉजिटिव कैपिटल ग्रोथ होगी. लेट्स स्टडी हियर अगेन. It is simply the that's what we have observed in the graph. इसकी interpretation है the vertical distance between the saving curve and depreciation line equal to the growth rate of capital. Then when k is less than k star and there is vertical distance between saving curve and depreciation line, then the growth of capital will be positive and k increases towards k star. तो होगा क्या कि k जो होगा वो that will be increasing और capital growth होगी that will be positive when the capital is less than the steady state capital. जब capital less होगा than the steady state capital, in that case we will say that कि हमारे पास जो कैपिटल की ग्रोथ है विल बी पॉजिटिव एंड कैपिटल विल बी इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द के स्टार. और इसको हम एक और टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं, विल से दैट द कैपिटल विल कन्वर्ज टुवर्ड्स द स्टेडी स्टेट लेवल. कैपिटल जो है वो स्टेडी स्टेट लेवल की तरफ कन्वर्जेंस उसकी होगी. द कैपिटल विल बी कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द स्टेडी स्टेट लेवल. The growth rate would be positive till the steady state. जैसे जैसे growth rate होगा, it will keep on increases before the steady state. Steady state level के पहुंचने से पहले जो growth rate of the capital that would remain positive. जो capital का growth rate है वो positive रहेगा. And here as k increases, जैसे जैसे k के अंदर इजाफा होगा, its growth rate declines. उसकी growth rate जो है वो कम होता जाएगा and it will approach to 0 as k approaches to k star. तो ग्रोथ रेट रहेगा पॉजिटिव लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज कम होता चला जाएगा. जैसा कि आप देखें कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है दिस वन फ्रॉम दिस वन, ये अगर आप ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस जो है जिसके ऊपर इस वक्त कर्व मैंने है कर्सर है, ये आप देखें दिस डिस्टेंस शोज दैट के डॉट ओवर के इज पॉजिटिव. लेकिन जैसे जैसे कैपिटल के अंदर इजाफा होता जाएगा, यहाँ से कैपिटल बढ़ता जाएगा, the capital will be converging towards the steady state economy और capital converge करेगा towards the steady state. और जैसे इसकी convergence होगी वैसे वैसे ये k dot over k की वैल्यू जो है यानी growth की वैल्यू जो है it will keep on declining. ये कम होती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता. कैपिटल ग्रोथ की वैल्यू कम होके 0 की इक्वल आ जाएगी and that there we will say that the economy has converged completely to its steady state. हम कहेंगे कैपिटल जो इकोनॉमी है वो completely converge कर चुकी है अपने steady state के ऊपर.
The saving curve gets closer to the depreciation line. फिर हम कहेंगे saving curve जो है that is equivalent to this depreciation line. और हम कह सकते हैं at steady state where average product of capital or the saving curve would be equal to depreciation line and growth rate would be zero at this point. जैसे ही steady state level के ऊपर पहुंच जाएगी economy और वहाँ then we will say that के growth rate would be zero at this point. इस point के ऊपर growth rate जो होगी वो zero होगी. अगर दूसरी सिचुएशन हो जो ग्राफ के अंदर मैंने आपसे कहा कि द एरिया दैट इज एट द राइट साइड ऑफ द एट द राइट द एरिया व्हिच इज एट द राइट साइड ऑफ द स्टेडी स्टेट एरिया जो राइट साइड पे है के स्टार से और जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि कैपिटल इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल. रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल से ज्यादा जो है वो एरिया है. At that case you will say that इस केस के ऊपर आप कह सकते हैं कि आपके पास जो है वो you will have basically capital greater than the. So ये जो इस वक्त आपके सामने है condition, that condition is basically I'll try to draw this condition. इस condition को draw करते हैं तो ये condition होगी जहाँ पे आप कह सकते हैं कि this is the value exactly where k, this k star, and you could say that it is another level of k and we can say that k is greater than k star. K जो है that star and basically this point will be where we say that k dot over k would be less than 0. That would be negative growth of capital. Capital को हमें कम करना पड़ेगा. Capital will have to be decline. Capital को कम करना पड़ेगा. So the growth rate would be negative till जब तक कि ये कर्व जोन सी है ये again is reached to the point where k dot over k is equal to 0. जब तक k dot over k जोन से वो 0 के बराबर नहीं आ जाए तो we will say that k it is equivalent to we will say that till then the capital will be declining. Till then capital जोन है वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज है वो कम होता चला जाएगा. So we can say that here depreciation curve is above the saving curve. जो हमने ये भी ग्राफ बनाया अगर आप इसको देखें यहाँ पे जो depreciation curve होगा that will be greater than the saving curve and due to the negative growth rate when k falls to k star the growth rate would increase and approaches to 0 at steady state. The growth rate would decrease. Sorry, the growth rate जो है वो कम होता चला जाएगा and it will approaches to 0 at steady state. जैसे जैसे हम कहते हैं इसकी वैल्यू जो है वो मनफी से 0 की तरफ आना शुरू हो जाएगी कैपिटल ग्रोथ की. So this is saving curve.